starting with new topic, which is of echo. Basically, echo is the phenomena which happens with sound waves, or in simple words, we can say that reflection of sound waves is known as echo. When sound waves reflect from some surface, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को आप सिंपली डिफाइन करते हो एज एन एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, तो अगर आप किसी एम्प्टी रूम की एग्जांपल लो, इफ यू आर अलोन इन दैट रूम and if you are producing some sound or try to speak there, so sound waves will reflect from the wall of that room and then bounce back to you, so you hear your own sound after short interval of time, right? Or different Yeah. examples, like if in mountainous area or some quiet place, so when you try to speak on that place, quiet place, so sound waves will reflect from the mountains or the other hills on that area, then reflect back towards you, so you can observe your own sound after a small interval of time. So that phenomena is known as echo of sound, right? As we already discussed in previous chapter that there is a reflection in water waves also. So same goes for the sound, that in sound waves they also reflect from a solid surface or a smooth surface. So after reflecting from that surface, we observe our own sound after reflection. So that phenomena is known as sound reflection of sound waves, known as echo, right? Yeah. So this is an other property of sound wave from reflecting surface. Okay, if we use this phenomena and if we discuss about the application of this echo, so how this echo is useful for us and how can we use this phenomena in our daily life. So let's suppose if there is a sound source, there is a source of sound, and in front of it there is a reflecting surface, or let's suppose there is a wall or a solid object placed in front of it. Since sound is longitudinal in nature, so the vibration of the particles are in a straight line, as we already discussed, right? So sound waves start traveling in a straight line, okay? And after reflecting from the wall, it bounce backs or reflect back in the opposite direction towards the source of sound again, right? And if we Yeah. assume that this distance will be equal to some 50 meters, so after reflection, what will be the distance of sound waves, or how much distance will travel? 50 again, right? 50 meters forward, 50 meters backward, right? तो जितना डिस्टेंस वो फॉरवर्ड कवर करेगी उतना ही डिस्टेंस साउंड वेव्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कवर करेगा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं? What will be the formula to calculate the speed of sound or to calculate the distance between source and object, and what will be the time in which sound is going to be reflect and bounce back towards the source of sound?
So if we want to calculate the speed of any object, so what was the formula of calculating speed? वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Distance over time. Distance over time. So v is equals to distance over time. This is the general formula to calculate the speed. But there is a little bit different situation in this process, that distance is going to be doubled, right? Because one time it is going in forward direction and the other part it is reflecting back to the opposite direction, right? So distance is going to be doubled in this situation. So we can modify this formula. V is equals to 2D over time, right? So sir, this is the formula of echo? Yes, we can use this formula in the example or in any question related to the echo of sound or reflection of sound. D stands for the distance traveled by sound. This is the total distance now, because we include 2 with it, which means that double of the distance. One is forward, one is backward. 1 plus 1 is equals to double of the distance, right? And T represents the total time. Basically, time means that the moment when sound source produce sound from it, and the last moment when the sound source observe its own sound after reflecting from the wall or any surface, right? जितने टाइम में हम Yes. प्रोड्यूस करते हैं और वो जितना रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें टोटल टाइम हम जो काउंट करेंगे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड कंबाइन का जो टाइम होगा वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और v is equals to the speed of sound. And if we discuss about daily life application or application of echo, so there is an example of a ship. नॉर्मली आपने देखा होगा जो मूवीज और क्लिप्स में दिखाते हैं कि शिप और एरोप्लेन में जो रडार सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है? अगर हम शिप की एग्जांपल लें, so there is also a radar system in ship, and the purpose of that radar is to identify or to detect the objects which are in the deep sea, right? Because underwater we cannot observe any object, any mountain or any cliff under the water or any rock. So we use this phenomena that जो हमारा शिप होगा उसमें से जो साउंड वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, तो वो जब उन स्टोन्स और उन रॉक से रिफ्लेक्ट बैक होकर शिप को रिसीव होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम एक डिस्टेंस उसका एस्टिमेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो शिप होगा वो कितने डिस्टेंस पर होगा उस ऑब्जेक्ट से या उस रॉक से जो अंडर वाटर है, राइट? So if we consider an example of a ship, so let's suppose this is our source of sound, which is a ship moving in forward direction. And if we discuss the example of a rock which is underwater or under the depth water, and if we discuss or want to draw a rock which is completely underwater and we cannot observe that object from our normal eyes, right? So how can we use our phenomena in this situation? That let's suppose there is a sound wave coming out from that ship which is going to reflect from that rock, right? So once in the forward direction, then after reflection it comes back towards ship in the opposite direction, right? So opposite direction Yes. reflect होने के बाद वो हमें दोबारा से रिसीव होगा, ठीक है?
और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. तो बाय यूजिंग दैट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, so v is equals to speed of sound, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, और हमें जब रिफ्लेक्शन के बाद सिग्नल्स रिसीव होंगे तो उसका टाइम पीरियड वहाँ पर नोट किया जाता है. ठीक है, अब तो क्योंकि मॉडर्न हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं कि हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता. मशीन्स जो है वो हमें हेल्प आउट करती हैं ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा जो रिफ्लेक्ट करने के बाद शिप ऑब्जर्व करेगा वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, टोटल टाइम. और इन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करके हम अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो अंडर वाटर है विद रेफरेंस टू आवर शिप, राइट. Yes. तो ये आपकी एक एप्लीकेशन आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, आपको आइडिया होना चाहिए. और बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी आप अपनी वर्कशीट में देखोगे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और इसी तरह अगर टेनिस कोर्ट की एग्जांपल ली जाए, अगर टेनिस कोर्ट में कोई सिंगल प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है और वहां पर आपको पता है सारी वॉल्स, या स्क्वॉश की एग्जांपल ले तो उसमें थ्री साइड वॉल होगी, एक साइड पर जो है वो ग्लास डोर होगा. तो जब वहां पर आप बॉल को स्ट्राइक करते हो सो यू कैन ऑब्जर्व दैट साउंड ऑफ बॉल continuously reflecting or producing echo in the squash court, right? So we can use Yes. that phenomena to calculate the distance, or you can say to calculate the time, that how much time it required to travel from source to the listener. And if you want to calculate the speed of sound in that medium, so you can calculate the distance first and then time, then substitute that values in this formula. So you can also calculate the speed of sound with the help of this formula, right? तो आपकी चॉइस, आप Yes. formula को किसी भी तरह से यूज करके किसी भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. तो इट्स अप टू यू. ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस? No. ओके, तो So we already discussed about different factors of sound in which frequency, quality, and loudness is included. And if we discuss about the range of audible frequency in our daily life or in our surrounding, there are many sound waves traveling from time to time. Some of them can be heard by our normal ears, but some sound or some waves cannot be observed by our normal ears, right? If we take the example of small insects, so we can't hear the sound of those insects because those bodies are very microscopic, and the sound waves generated by those bodies are very low in frequency. So that's why we can't hear that sound of those bodies, right? And if we take the example of fighter planes, fighter jets, so that planes or that macroscopic bodies produce sound of very high frequency, right? So there is a range, एक फिक्स रेंज हमारे पास होती है कि जो हम साउंड की ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे नॉर्मल एयर से, राइट. तो उस रेंज की वैल्यू आपको आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आपके पास इंक्लूड होते हैं. तो जो नॉर्मल ह्यूमन एयर की रेंज होगी, range for normal human ear, or you can say that the audible range, which we can observe easily with our normal ear, that is starting from 20 hertz
limiting to the value of 20,000 hertz, right? So the minimum frequency of the sound, or the sound of minimum frequency, we can observe from our ear is equals to 20 hertz, and the maximum frequency we can observe from our normal ear is equals to 20,000 hertz, right? And we can also write this 20,000 in the form of suffix, which is equals to 20k hertz, right? K means kilohertz. That is also equals to 20,000, right? Yes. तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए, नॉर्मल कंडीशन में। अगर ह्यूमन एयर में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई इसमें फिजिकली कोई इस तरह से आपके पास डिफेक्ट ना हो, तो नॉर्मल जो रेंज होती है ह्यूमन एयर की वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 20,000 हर्ट्ज तक रेंज कर सकती है। तो 20 हर्ट्ज से लोअर साउंड भी हम नहीं सुन सकते, और उससे हाई साउंड भी ऑडिबल नहीं होता हमारे ह्यूमन एयर के लिए, क्योंकि वहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती हैं, और हमारी रेंज से वो आउट हो जाने की वजह से हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि डेली लाइफ में हमारी Yes. सराउंडिंग में रेडिएशंस हैं, माइक्रोवेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, लेकिन हम हर वेव का जो है वो साउंड ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट? एंड इफ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल, so we already discussed about that in solids speed of sound is greatest one, right? Yes. And if we want to write the value for that material, तो सॉलिड के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी इन सॉलिड, और यू कैन से दैट इफ वी कंसिडर सम मटेरियल, लेट्स सपोज देयर इज एन एग्जांपल ऑफ concrete, so the value of speed of sound in this material is almost equal to 5,000 meter per second, right? So 5,000 meter per second is the speed of sound in the material, or you can say solid material, which is made up of concrete. And if we discuss about an other material, which is of steel, so the speed of sound in steel material, any guess, will be greater or less than concrete? Less? Less. Oh no, should it be 6,000? Yes, 6,000 meter per second. Very good. So 6,000 is the speed of sound in steel. And if we discuss about liquid, that is water. So what will be the speed of sound in water? 1,400? 1400. Very good. आपने पहले से याद किया होगा. I was following the question. Okay, very good. So 1400 meter per second is the speed of sound in water. And we already discussed about the air, that in air speed of sound ranges from 330 to 350, right? In air at Yes. 2 degrees Celsius. Three thirty to 350 meter per second. And the last topic from this chapter is of ultrasound, which is also a type of sound wave with very high frequency, right? So if we discuss about ultrasound in hospitals, there are many devices or medical equipment which is related with this concept of ultrasound, but we can't hear that high frequency sound because our ears are not able to hear the frequency higher than 20,000 hertz, right?
So basically, ultrasound is a sound with a frequency higher than 20,000 hertz, right? Ultrasound is a sound with a frequency of, or you can say that with a frequency greater than 20,000. With a frequency greater than 20,000 hertz, right? And there is a device which is used to generate this type of waves and observe the results from this experiment. And that device is known as CRO, cathode ray oscilloscope, right? So CRO is the device which is generally used to generate these types of frequencies. And if we discuss about the use of this device, so this device is normally used in the hospitals to detect the problems or detect the diseases in our body or detect some type of extra tissues, muscle going to be generated in our body. So this basically ultrasound process is used in the medical field, right? And this Yes, sir. also works on the principle of echo, right? And if we discuss about that, how these waves are going to be generated in this CRO, cathode ray oscilloscope. So the material which is used to generate these type of waves is known as quartz, right? And that material also used in some watches. Mm, You observe that in some rich watches there is a word quartz already mentioned there. So quartz is a material which is used to produce these type of waves or these type of high frequency waves. This is the type of crystal. So generally crystal type material which is known as quartz used in ultrasound machine or CRO, and with the help of electricity we vibrate this crystal material, and in the result of their oscillation a strong beam of sound wave greater than the 20 hertz is going to be produced, right? Electrically vibrated this material to generate a sound of very high frequency which is greater than 20,000 hertz, right? And in final results we receive these vibrations in form of electrical signals. We receive these types of vibrations in form of electrical signals, और अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल्स की क्लिप्स और वीडियोस में तो एक आपके पास मशीन स्क्रीन टाइप मशीन होती है जिसमें वेव्स की फॉर्म में हार्ट बीट और इस तरह की रेडिएशन हम चेक कर रहे होते हैं, राइट? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No. तो आपने देखा होगा वो हार्ट बीट के लिए जो स्क्रीन हम यूज करते हैं वो उसी डिवाइस को हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं, और उसमें कुछ रेडिएशन आप सॉरी जो वेव्स की ऑब्जर्वेशन होगी वो इसी तरह से होगी कि उसकी स्क्रीन भी ये हमारी स्क्रीन की तरह ग्राफ की फॉर्म में मेंशन होगी, और उसमें काफ़ी कंट्रोल्स होते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेव्स को एडजस्ट करने के लिए, और उसमें हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो हार्ट बीट है या जो साउंड वेव जनरेट हो रही हैं आपकी बॉडी के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है?
और उस पर डिफरेंट स्केलिंग्स होती है, इतना डिटेल आपको प्रोसेस पूरा याद नहीं रखना। तो नॉर्मली हार्ट बीट में तो ये होता है, हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। बट लेट सपोज इन मेडिकल फील्ड अगर किसी की बॉडी में कोई स्टोन या कोई ऑर्गन, कोई मसल टिश्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है मास में, तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू, और वो वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट बैक होकर जब डिवाइस को इंडिकेट करती है सिग्नल, तो वो सेम एको के फिनोमिना की तरह हम इसे यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। Yes. तो एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक?